ये स्टूडेंट्स नीट के थोड़े शॉर्टकट प्रॉब्लम्स देखते हैं बेटा। नीट 2026 में भी पूछा गया था परसेंटेज की प्रॉब्लम्स के ऊपर। इसको फास्टेस्ट करने का एक तरीका है, सो लेट अस ट्राई टू फास्टली रिवाइज इट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर परसेंटेज फॉर एनी परसेंटेज वैल्यूज, परसेंटेज टाइप प्रॉब्लम्स। ओके, फॉर एनी परसेंटेज वैल्यू, फॉर योर एनी परसेंटेज वैल्यू। ओके, सी इसमें क्या याद रखना है अपने को? अगर मान के चलो सम फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स योर x is raised for the power of your 2. If percentage change, if percentage change in x is some alpha percentage, okay, then percentage change in y कितना होगा? Percentage in y will be equal to, simply you write 2 times of your alpha प्लस अल्फा का स्क्वायर करो डिवाइड बाय 100 कर दो. सो दिस इज योर शॉर्टकट. y इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस ऑफ योर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 100. ठीक है ना? कंडीशन क्या है? इफ y इज इक्वल्स टू सम एक्स स्क्वायर, the percentage change in x is some alpha percent, then percentage in y will be equal to how much? y is equals to 2 times of वो जो percentage हमने देखा है ना, x is हम अल्फा परसेंट मान के चल रहे हैं ना, वो अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100. ओके ना? चलो मान के चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं. फॉर 10% ऑफ एक्स मान के चल रहा हूं. फॉर 10% ऑफ एक्स, परसेंटेज चेंज इन वाई कितना होगा बताइए? परसेंटेज चेंज इन वाई विल बी इक्वल टू 2 इंटू यूर, ये कितना हो गया यहाँ पर? 10 प्लस ऑफ योर 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 100. So it is right now for me, 2 into 10 is 20 plus of your 10 square is how much right now for me? 100 divided by 100. ये वाला चला गया. So this will be equal to 20 plus 1. So that will be equal to 21%. That will be the answer. ठीक है ना? अगर सेम वे फॉर 15% ऑफ एक्स मान के चल रहा हूँ. फॉर 15% ऑफ एक्स, परसेंटेज चेंज in y will be equal to 2 into your 15 प्लस ऑफ योर ये 15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 कर लो. सो दैट विल बी इक्वल टू योर, दिस इज योर 30 प्लस ऑफ योर 15 स्क्वायर, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय योर 100. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल बी गेटिंग 32.25%. ठीक है ना? द सेम वे फॉर 50% 50% ऑफ योर एक्स, परसेंटेज चेंज इन y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 50 प्लस ऑफ योर 2 इंटू योर, दिस इज योर 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 100, isn't it? So that will be equal to your 100 plus of your, this is 2 into, this is 50 into 50 divided by 100. A0 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 चले गए. So that will be equal to 100 plus, so 5 5 is 25 25 इतना ही होगा ना बेटा? क्लियर? सॉरी, अब 2 क्यों डाला मैंने? अब 2 नहीं आएगा ना. चलो, सो ये कितना हो गया? 5 5 is 25. So that will be equal to how much for me? 125%. This will be the answer. ठीक है ना? चलिए, अब पूछेंगे सर अगर परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ? देन आई एम राइटिंग वन मोर रिलेशन हियर. फॉर परसेंटेज डिक्रीज
वो percentage decrease in x. Percentage in y will be equal to, सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन लिख दीजिए. So it will be 2 into your alpha minus alpha square divided by 100. This will be the relation. ठीक है ना. परसेंटेज अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लेना है बेसिकली, इस तरह से. ठीक है. एग्जाम्पल देखो. फॉर 20% decrease, for 20% decrease in x, percentage of your y will be equal to minus, this will be equal to 2 into your 20 minus, this is your 20 ka whole square right now for me 400 divided by 100, isn't it? ये 0 चले गया, so this will be equal to minus, this will be equal to 40 minus of your 4, तो ये हो गया minus 36%. Okay, I hope you got it. Sure. Next one. If percentage change is less than 10%, okay, जब क्या करना है यहाँ पर देखो. For any relation, for any relation like y is equals to k into x power of your n, okay, where k is equals to your constant. If percentage change, if percentage change in x is equals to alpha percent, that is given say in the problem for, okay, then percentage change in y is equals to, जो पावर था ना वो पावर यहाँ पर डाल लीजिए, into your alpha percent से multiply कर लीजिए, that will give me the answer for him. Okay, so what is n here? N is the power of your x. N is power of your x. And this is applicable only for the percentage which are lesser than of your 10% के लिए. ठीक है ना. चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. देखो, if percentage increase, if percentage increase in velocity, percentage increase in velocity is 0.4%, okay, find the percentage change, find the percentage change in kinetic energy. चलो बताओ, what will be the answer? Kinetic energy का फॉर्मूला क्या है बेटा? Kinetic energy is equals to half into m into v square. Percentage change in velocity is how much beta? Percentage change in velocity. In velocity is how much for me? 0.4%, lesser than 10% है ना? So percentage change in kinetic energy will be equal to how much for me? 2 into your 0.4% से multiply कर लीजिए. So that will come out for me 0.8%. This will be the answer. So because the power of V is how much for me? The power of V is 2 here. इसलिए मैंने स्लैक कर लिया. ठीक है ना. और एक क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से. A copper wire, a copper wire is stretched to make 8.5% longer. 0.5% longer. Okay. The percentage change in its resistance, if its volume remains constant, if its volume remains constant is, चलो बताओ जल्दी से. ट्रिक अप्लाई कर लोगे तो विद इन सेकेंड्स में आ जाएगा. रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R is equals to rho into L divided by A, divided multiply by your L on both the sides, so it is rho into L square divided by volume. वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो R is directly proportional to your
एल स्क्वायर होगा. सो परसेंटेज चेंज इन द लेंथ कितना राइट ना फॉर मी 0.5% है. सो आई कैन से हियर परसेंटेज चेंज in resistance is equals to 2 into 0.5%. So ये हो गया मेरे पास 1% will be the answer for it. Am I clear? ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं. कभी भी परसेंटेज प्रॉब्लम था ना, ये वाला यूज कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर्स फॉर मी. इफ परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, percentage change in kinetic energy is 4%. Okay, find find the percentage change. Find the percentage change in momentum. Okay, see here. Momentum का फॉर्मूला क्या है? P is equals to under root of your 2m into your kinetic energy. That means I can write this one as root 2m into this is root k. That can be written as root of 2m into k to the power of 1 by 2 लिख सकता हूँ ना बेटा. So it's asking the percentage change in momentum. So percentage change in momentum will be equal to 4 into half. ओके ना, क्योंकि पावर कितना है हाफ है ना. सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये कितना आ गया 2%. बिकॉज पावर ऑफ के इज हाउ मच फॉर मी हाफ. दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग, बिकॉज पावर ऑफ के इज हाफ, इसलिए 4% से मल्टीप्लाई किया. ठीक है ना. सो आई होप यू गॉट वन टॉपिक जो नीट 2026 में भी क्वेश्चन आया था इस मॉडल पे. तो ऐसे वाले क्वेश्चन आ गए थे ना, तो दिस विल गिव यू द टाइम सेविंग टिप टू डू द प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. तो ये थोड़ा कर लो आप लोग प्रैक्टिस. वैसे वाले परसेंटेज में एक लेसर देन 1% के लिए है, ये हो गया एक परसेंटेज इफ इट इज लेसर देन 10% के लिए, और ये वाला है कोई भी परसेंटेज के लिए ग्रेटर देन दैट वन. सो दिस लिटिल बिट ऑफ योर गुड मेथड्स, परसेंटेज टाइप प्रॉब्लम्स फॉर एनी परसेंटेज वैल्यूज. ठीक है ना. चलिए, थैंक यू.